two capacitors, 3 microfarad and 6 microfarad, and they have terminals A and B. So the arrangement was like this. Then what I did, I filled the space between this capacitor with a dielectric medium of dielectric constant equals to 4. So the capacitance will change. Capacitance will change. Let me call this as C1, this as C2. This one is C1, C2. So first find the initial capacitance, equivalent capacitance, then find the final equivalent capacitance. Find initial equivalent capacitance and final equivalent capacitance. That the capacitance is 2 microfarad. Yeah, equivalent capacitance in Initial. Yeah. In the first case, it is 2 microfarad. And in the second case, we have introduced a dielectric constant in the same capacitor, a dielectric medium. So that will increase its capacitance. No, the dielectric medium is not in the second capacitance. No, nothing is given in the second capacitor. So I got 4 microfarad. Yeah, equivalent is 4. The equivalent is 4 microfarad? Yes. Okay. Now, next question is, if A, B terminal is connected to a battery of EMF means voltage, a battery of EMF, 5 volt, then find, you have to find charge on capacitor 1, then charge on capacitor 2 in the first case, or initial case, then potential drop on capacitance 1, potential drop on capacitance 2, then electric field in capacitance 1, electric field in capacitance 2, then energy stored in capacitance 1, energy stored in capacitance 2, then total energy stored, then you have to find work done by battery, and then you have to find energy lost in the form of heat. That is energy lost while charging the capacitor. Energy lost while charging. Sir, I didn't understand the second part of this. In the second part, see, the first capacitance will remain the same. That will remain C2 dash. C2 dash will be equal to C2. That will be 6 microfarad. But for the first case, C1 dash, we know that the new capacitance will be epsilon R times the original capacitance. So this will become
4 3s are 12 microfarad. Understood. Okay. So, Yeah. yeah, for third one, we have to calculate E, but there is no distance in between the capacitors. Yeah, I'll give you the dimension of the plates. The plate area is 20 centimeters square, and the gap between the plates, that is 8.85 millimeter. So I did not get it. I mean, how could we find the charge without having you're only given EMF? EMF, and you have to connect it to this system. First case. Oh, this is exactly okay. See, next question is this. Nupur was disconnected. So the question was this: we are connecting this first arrangement to a battery of EMF 5 volt, and you have to find this charge on one potential and one first and second capacitor, electric field on the first and second capacitor, and these quantities. So connect this to a battery and find this values. Sir, Q1 should be equal to Q2, right? We'll be discussing it. We'll be discussing it. Solve the whole, all of the 7 parts. I'll not tell you the answer just yet. Sir, what is E1 and E2? E1 and E2 are electric field inside the capacitor C1 and C2 respectively. What was our value for area and distance between the plates? Area 20 is given centimeters. as 20 centimeters square, and distance between the plates is 8.85 millimeter.
Apura, have you found out the charge? Sir, 10 microfarad. And on the second one, same or सीरीज में तो डिफरेंट होता है ना? नो, सेम ही होगा. अपूर्व, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन टुगेदर. जितना रिमेनिंग है वो खुद हम सॉल्व कर लेंगे. सेम रहेगा. सेम ही रहेगा. हाँ, सेम रहेगा. ओके, V1 कितना आया? 5/3 और 10/3. 5/3 वोल्ट और 10/3 वोल्ट. जिसके पास जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसका वोल्टेज भी ज्यादा है. ये देख सकते हैं आप यहाँ से. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? वो कर रहा हूँ. अच्छा, सो 5/3 डिवाइडेड बाई 8.85 ऐसा लिख सकते हैं. है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज voltage upon distance, right? हाँ, लिख. Okay, so 5/3 upon 8.85. अब एग्जाम में ऐसा आएगा तो बहुत कैलकुलेशन बहुत लंबा हो सकता है. so थोड़ा रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं, नहीं तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर देंगे. so it Sir, is 5. we don't have to convert 8.85 into meters. Yeah, I will divide by 1000. so 500 into 1000 divided by 15. this is 2555. है ना? सो सी, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. 500/2500. 55 को खा गए. जो वैल्यू आएगी थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो उसको बाद में कम कर देंगे. ओके, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड. सो 5 and 5 200. सो 200 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली. थोड़ा सा कम कर देंगे तो 195 लिख सकते हैं. एग्जैक्ट नहीं है बट ये अप्रोक्सीमेट है. ओके, वी कैन सेव आवर टाइम. एंड अगर मैं कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेट मी सी कितना आ रहा है. सो इट्स 5 divided by 3 divided by, so 188 आ रहा है. ओके, सो इट अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 190. सो 190 लिखना बेटर होगा यहाँ पे. दिस इज अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन. 200 आया बट मैंने न्यूमरेटर थोड़ा सा कम किया था तो वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. सो 190 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं. सो How did 190. it cal- Yeah. So I'm really sorry to interrupt, sir, but how did you calculate charge in the first place? अरे भाई, चार्ज Q इज इक्वल टू CV होता है. CV अब इस- ना, हाँ वही. तो तो मतलब- वोल्टेज 5 वोल्ट है. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया था 2 माइक्रोफैरेड. 5 into okay, 2. sorry, equivalent. हाँ, sorry. And sir, what about voltage? I mean, वोल्टेज के लिए ये फॉर्मूला है, V is equal to Q by C. Q by हाँ, okay, हाँ, ठीक है. रिवाइज नहीं कर रहे घर पे, बस मस्त Yes. खा रहे पी रहे No. ऐश कर रहे. और No, sir, nothing like that. No, absolutely not. अरे ऐसे क्वेश्चन तो किए थे लास्ट टाइम. Sorry, sir. ये क्वेश्चन सोचना कोई बुरी बात नहीं है बट रिवाइज करना इम्पोर्टेंट चीज है. Yes, sir. हम्म. अच्छा, दिस कोरोना टाइम इज गुड फॉर बोथ काइंड ऑफ पर्सनालिटीज, है ना, जो खा पी के मस्त ऐश करते हैं और सोए रहते हैं फॉर दैट. एंड सेकंड टाइप ऑफ पीपल जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं एंड लगे ही रहते हैं. हाँ, थोड़ा बाहर नहीं निकल पा रहे तो स्पोर्ट्स वालों के लिए थोड़ा दिक्कत है, ट्रैवलिंग वालों के लिए दिक्कत है. अच्छा, ये कैलकुलेशन एक पहला वाला कैलकुलेट कर लिया. सेकंड वाले के लिए सी, डिस्टेंस सेम है और वोल्टेज डबल है. हाँ 2 से मल्टीप्लाई. गुड. सो अप्रोक्सीमेटली 380.
एग्जैक्ट कैलकुलेट करूंगा तो 376 आएगा, सो इतना तो एरर चलेगा वोल्ट पर मीटर। एनर्जी कितना आ रहा है अपूर्व? सर 50 हाफ by 3 कैपेसिटी 50/3 यूनिट microjoule. microjoule. So half capacitance is 3 into V square. So 525 by 9. 50/3 half CV square है ना, 25/6 और है। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? सर मैं पहले वो 10/3 वाला बोल रहा हूँ, अच्छा 10/3, वो दूसरा वाला। हाँ 10/3 के लिए इसका 4 टाइम्स होगा, हाँ तो वो 50/3 ठीक है। इसका 25/6 आ रहा है पहले वाले का, हाँ ठीक है 4 पॉइंट समथिंग लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड वाले का 50/3 माइक्रोजूल्स। टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा? वो दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ तो फटाफट ऐड करते हैं ना। 25/6 यहाँ पे आ जाएगा 100/6, 125/6 125/6। या 125/6, थोड़ा सा 3 से डिवाइड भी करते क्या, नहीं होगा, चलो 125/6। गुड। देन वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला कौन बताएगा? तो मुझे हम्म, V1 एक्चुअली 10/3 होना चाहिए और V2 5/3, क्योंकि फर्स्ट कैपेसिटेंस 3 था और सेकंड 6 था ना, तो सब अच्छा ऑपोजिट हुआ। हाँ मैंने उल्टा लिखा हुआ है। तो इसमें वो 25/3 और 50/3 होएगा यू एनर्जी। Q/C कैपेसिटेंस इसका वोल्टेज 10/3 होगा एंड इसका 5/3। दिस इज 10/3, दिस इज 5/3। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी 380 और 190 होगा, ऐसा होगा। गुड। 380 वोल्ट पर मीटर, 190 वोल्ट पर मीटर। ओके, और एनर्जी फर्स्ट वाले का फिर 50/3 होगा। ये निहार कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा, सिर्फ ऐड करके फाइनल आंसर दे रहा है। खुद से कैलकुलेट नहीं कर रहे। ओके 10/3 380। मैं तो टीचर हूँ, मैं तो मतलब आंसर देख रहा था। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू वी बाई 200/3, सो 50/3 है ना, ये 50/3। और इसका कितना आएगा? 25/3, 25/3। मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया Q इंटू V/2, क्योंकि Q और V मुझे दिख रहा है यहाँ। ओके निहार फटाफट कैलकुलेट करना है फाइनल कितना आएगा टोटल एनर्जी। 3 सेकेंड है। 3 2 1। अरे 50 + 25 75/3, 25 माइक्रोजूल्स हो गया। अरे डायरेक्टली भी कर सकते थे ना, यहाँ पे 5 वोल्ट है और इक्विवेलेंट पे चार्ज है 2 माइक्रोफैरेड। हाँ नो, इक्विवेलेंट पे चार्ज है 10, इक्विवेलेंट पे भी चार्ज 10 ही आएगा, सो 10 × 5 तो 50 आ रहा है। 6325। QV/2 या QV/2 ओके 25 माइक्रो। फिर वर्क डन बाय बैटरी फॉर्मूला क्या है निहार? फॉर्मूला याद है वर्क डन बाय बैटरी का? नहीं याद और है? नो सर, नहीं, एनर्जी लॉस का याद है। हाँ एनर्जी लॉस को तो मुझे भी याद है। सी अगर फॉर्मूला नहीं याद है मींस यू हैवंट रिवाइज्ड इट। आई विल टेक द सिंपल कंक्लूजन कि रिवाइज नहीं किया है, इसलिए याद करके आना है, मेमोराइज करके आना है।
अरे अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, बगल में कॉपी रख के चेक भी कर सकते, देख के भी बता सकते थे। नो सर बोलने की जरूरत नहीं थी। Okay. ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी होता है चार्ज ट्रांसफर्ड बाय बैटरी इनटू द ईएमएफ ऑफ बैटरी। ठीक है, तो पहला वाला बैटरी कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, जस्ट टेल मी। पहला वाला के बैटरी कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहा है निहार? सर मतलब 10। 10 कर रहा है, तो बैटरी हाँ। बैटरी बैटरी ने 10 माइक्रोफैरेड यहाँ 10 माइक्रोकूलम यहाँ से उठाया, और तो यहाँ पे -10 हो गया, उसको ट्रांसफर करके वो इस प्लेट पे ले गया, तो यहाँ पे +10 माइक्रोकूलम हो गया। हम्म। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर Yes. किया 10 माइक्रोकूलम और वोल्टेज था 5, तो वर्क डन कितना हो गया? सर वर्क डन ये 5 into ये 10। हाँ मतलब 5 into 10, 10 का टेबल कितना? 10 का टेबल याद 5 है? into 10। Yeah, अरे हाँ, वो it's 50, it's 50। 50, yes, 50 माइक्रोजूल्स इज करेक्ट। ठीक है, तो सी जैसा प्रेडिक्ट किया था नॉर्मल केसेस में, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ ऑफ वर्क डन बाय बैटरी। तो एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ ये वही वर्क डन बाय बैटरी, हाफ ऑफ वर्क डन कितना होता है? मतलब वही 25 है मतलब। हाँ 25। हाँ। अरे डोंट वरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी इंटरैक्टिव, ये तो स्टूडेंट्स थोड़ा बोर हो जाते हैं। एनीवेज, सो ये था फर्स्ट केस में। फटाफट सेकंड केस में कैलकुलेट करना है। ऋषित जस्ट टेल मी द आंसर्स। सेकंड केस में आई विल राइट इट हियर। Let me just write the question and then we'll start. Okay, just calculate with me, Rishit. Second case में tell me charge कितना होगा? 20, yeah, 20 microfarad, 20 microfarad, 20 microfarad, 20 microfarad. वोल्टेज कितना होगा? 20/3, 10/3। 20/3, 12 हो गया ना? सेकंड वाले केस में 12 है ना? हाँ हाँ। So 20/Q/C, हाँ 20/12, हाँ 20/12, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/3 लिख सकते हैं। 5/3। 5/3 वोल्ट। और सेकंड वाले का 20/6 ना? 10/3। हाँ 10/3 का लग 10/3 इज करेक्ट। 20/6 इज रॉन्ग, क्योंकि निहार ने रिवाइज नहीं किया था। हाँ। ओके ओके, 20/6 इज करेक्ट। ठीक है, 20/6। ओके, टेल मी द इलेक्ट्रिक फील्ड ना। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन 5/3 डिवाइडेड बाय 8.85 8.85, 1000। या 188। 188 अप्रोक्सीमेटली। ये सेम ही कैलकुलेशन है ना? 188 was the right answer. व्हाट डिड यू से? आवाज क्लियर नहीं आ रही। So in calculator it showed 188, not so अच्छा अच्छा, आईसीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड होता है क्या एग्जाम में? हाँ बोर्ड्स में allowed है। अच्छा, श्योर ना? मतलब फिर तो मैं अलाउ करूंगा, मस्त। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन क्यों सिखा रहा हूँ? नो नीड फॉर दैट। ठीक है, 188 वोल्ट, 188 वोल्ट पर मीटर। और सेकंड वाले के लिए 377। 377, डबल उसका। हाँ डबल होगा। सो पिछले केस में भी तो डबल होना चाहिए था, नहीं हाफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस हाफ हो गया, चार्ज सेम है। नो, पोटेंशियल ड्रॉप
5/3, हाँ ठीक है, डबल होगा। ओके ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड 25/6. 25/6। सी Q इंटू V/2 Correct. होता है ना। अगर डबल होगा तो 376 रहेगा ना। हाँ वो कैलकुलेटर से हाँ। 377 आ रहा होगा, 108 पॉइंट समथिंग होगा मे बी। हाँ। So Q into V, 20 into 5/3, 100/3 divided by 2, that is 50/3, 50/3. 50/3 microjoules. 100 Second by वाला 3. 100/3 100/3. microjoules, 100/3 microjoules. Okay, total energy stored 50 microjoules. 50. Work done by battery 20 into 5. So 100. 100, मुझे लगा 20 का टेबल नहीं आता है, ठीक है। एंड एनर्जी लॉस्ट व्हाइल चार्जिंग 50. 50। 50. ओके ठीक है। सो सी कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक पुट कर रहे हैं, सो वी सी दिस इफेक्ट, चार्ज बढ़ जा रहा है, वोल्टेज का वेरिएशन डिफरेंट हो जा रहा है, एनर्जी स्टोर्ड डिफरेंट हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जा रहा है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड भी डिफरेंट हो जा रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर एंड बेसिक फॉर्मूलास याद है, देन यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। नाउ अभी और इफेक्ट देखते हैं क्या होता है अगर कैपेसिटर के बीच बीच कैपेसिटर में हम इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए। फॉर एग्जांपल टेक दिस केस, there was a simple capacitor and so capacitance given था, let us say capacitance was given, इस प्लेट का एरिया A है और gap between the plates is D. So we can write the capacitance as A epsilon naught by D. A epsilon naught by D. Okay. Focus on what I'm teaching here. मैं sufficient time दूंगा लिखने के लिए, एक बार फोकस कर लिया तो दोबारा पढ़ने में कम टाइम लगेगा। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर रहा हूँ इसके अंदर। बट पूरे रीजन में नहीं, सिर्फ थोड़े ही रीजन में, सिर्फ स्मॉल रीजन में। लेट अस से D/2 को मैंने फिल किया, D/2 अभी भी एयर है और बाकी D/2 अभी भी D/2 को फिल कर दिया एक दूसरे कैपेसिटर से, जिसका दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कॉल इट K। सो इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का जो ट्रिक है दैट इज दिस, कि this one capacitor I can divide into two parallel capacitors, two capacitors in series, two capacitors in series. So इसको bifurcate करके I will distribute it into two capacitors, जहाँ पे first capacitor is this one. So first capacitor, let us call this C1. So C1 की वैल्यू, एरिया तो सेम ही है इस कैपेसिटर का, हाफ वाले का, और सिर्फ एयर ही है तो एप्सिलॉन नॉट ही लिखेंगे, बट डी की जगह हम लिखेंगे D/2। एंड सेकंड वाले केस में एरिया अगेन ए है, एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लिखेंगे K एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यहाँ पे। डिवाइडेड बाय अगेन डिस्टेंस हो गया हाफ D/2। सो ये दोनों के इंडिविजुअल कैपेसिटेंस हो गए, और इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए दे आर इन सीरीज। सो सीरीज के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2। अंडरस्टूड? सो अगर शीट ऐसे ऐड किया हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे ऐड किया गया हो, तो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पैरेलल कैपेसिटर्स। ओके, नोट दिस डाउन, देन फाइंड द फाइनल वैल्यू, C equivalent कितना आएगा।
नोट कर लिया? ओके, सो ये तो मैंने बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं. एंड हाउ दिस हैपेंस, मीन सपोज इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, प्लेट का एरिया है ए. सो वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड, we can write the electric field. So suppose plate का area A है, so you can write electric field here is sigma by epsilon naught. So first region में electric field हो जाएगा E1, that is Q by A epsilon naught, और second region में electric field हो जाएगा Q by A into K epsilon naught. Electric field becomes 1 by K times. Is it okay? This you remember? So previous question, if you are filling the dielectric constant, dielectric medium with capacity of some value, then electric field inside reduces by K amount. Okay, so agar total potential drop is V, if total potential drop is V, then we can write V like this. V will be equal to जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो D/2 रीजन के लिए, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड भी D/2 रीजन के लिए. मीन्स जो V1 पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज E1 इंटू D/2, और जो V2 पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज E2 इंटू D/2. फिर यहाँ पे E1 E2 की वैल्यू लिख सकते हैं. सो V1 will be, to put this here, put E2 here, so Q by A epsilon naught plus Q by A into K epsilon naught multiplied by D/2 D/2. मुझे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा, यहाँ से सेपरेट करना है Q by V, Q by V सेपरेट करना है. सो Q कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा D/2 A epsilon naught प्लस D/2 KA epsilon naught. यहाँ से Q by V कैलकुलेट किया, तो इसको नीचे ले जा रहे हैं, ये इधर आ जाएगा. सो दिस इज 1 by this quantity, D/2 A epsilon naught plus D/2 KA epsilon naught. इसको इधर ले गए नीचे, सॉरी इसको इधर ले गए नीचे, और ये डिनोमिनेटर पे जाएगा फिर लाइक दिस, और इसके वाले कैलकुलेट किया तो यही सेम आएगा वैल्यू. ओके, कोई डाउट है इसमें? So D/2 A epsilon naught K plus 1 by K. K plus 1 by K. Okay, note this down. कोई confusion है then ask. Nihar, do you have any question? No, so I'm just going through the thing, the derivation. Okay.
सर वो लास्ट स्टेप नहीं समझा जो ब्लू में लिखा है। This will be 1 by this thing. Actually, whole thing का inverse. So C equivalent यहाँ से आ जाएगा Q by V. That is 2A epsilon naught by D. K divided by K plus 1. सॉल्व करके बताओ। अपूर्व। सर सर आप सॉल्व करके बता दो। ओके ओके सी यहाँ पे सी आई विल टेक D by 2A epsilon naught कॉमन और ये वाला ही सॉल्व कर देता है। मैं ही सॉल्व कर दूं, मस्त खाना पीना सोना बस। D by 2A epsilon naught कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 plus 1 by K। इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा D by 2A नो 2A epsilon naught by D ऊपर चला जाएगा और दिस इज K plus 1 by K। So K plus 1 by K ऊपर जाएगा तो K divided by K plus 1। This will be C equivalent। पिछले वाले से सॉल्व करेंगे तो भी नहीं आएगा। ये C equivalent का इनवर्स आ रहा है, इसका रिवर्स कर देंगे तो C equivalent would be 2A epsilon naught by D K divided by K plus 1। Is this clear? हाँ। Okay, note this down, then we'll go to another question like this. Okay, next. Suppose there is a capacitor. Area A है, gap between the plates is D. और इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है दैट इज T एंड आई वांट टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला या तो फिर यू कैन यूज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड या तो फिर डायरेक्टली 3 कैपेसिटर से पैरेलल में। तो पहले फर्स्ट वाला इजी वाला मेथड यूज करते हैं। 3 कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में, सो आई कैन राइट 1 by C इक्विवेलेंट। एरिया है इसका A। अच्छा मुझे T दिया हुआ है, सो आई विल राइट ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा T1 और ये वाला डिस्टेंस लेट अस टेक इट T2 and we can say that कि T1 plus T2 will be D minus T, right? कि T1, T2 और T ऐड करेंगे तो D आ जाएगा। So I can write T1 plus T2 equals to D minus T. Make sense? Okay. So 1 by C equivalent will be capacitance of this part. That will be A epsilon naught by D. So C1 का equivalent, I'm writing directly. अगर कोई confusion हो then just ask. So A epsilon naught by T1. A epsilon naught by T1 plus इसका let us say dielectric constant is K. So K A epsilon naught by T2. I'm writing 1 by C1, 1 by C2 like that because they are in series. They are in series. For series formula, we have 1 by C equivalent plus 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 like that. So this will be not T2 but T. So this is T2 divided by A epsilon naught. From here you can write T1, T2 को directly add कर सकते हैं. We can add these two directly. And I can take 1 by A epsilon naught common. So that will give me T1 plus T2
plus T. So from here I get 1 by C equivalent. Instead of T1 plus T2, I can write D minus T. So 1 by A epsilon naught. Here it will be T by K. So D minus T plus T by K. So I can write C equivalent as A epsilon naught whole divided by D minus T plus T by K, like this. Any questions? Okay. Second method we can use is of electric field wala method. So electric field wala method, we can just write the total electric field is equal to, no, electric field in this region, call it E1, then this region E2, in this region call it E dash. So you can write E1, E2 and E dash. So E1 will be equal to, charge is given as Q. So E1 will be Q by A epsilon naught, and the same electric field will be for E2 region. But for E dash region, जहाँ पे ये dielectric medium है, that will be Q by Ka epsilon naught. So potential drop we can write is potential drop across first region plus potential drop across the dielectric region plus potential drop across the second region. So we can write V is equal to E1 into T1. Potential drop across this is, see, E is equal to V by D. So I can write V is equal to electric field times D. This is valid for uniform electric field. Uniform field. So E1 T1, E dash T plus E2 or E1 into T2. So I can write the potential. I will put the value of E1 from here. So Q by A epsilon naught T1 plus this is Q by Ka epsilon naught into T plus Q by A epsilon naught into T2. बहुत मेहनत करेंगे, 2-3 दिन लगाएंगे सॉल्व करने में, उसके बाद फाइनली सॉल्व करने के बाद ये सेम रिजल्ट आ जाएगा. ओके, सो A epsilon naught divided by D minus T plus T by K. कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस C equivalent find out करने के लिए Q by V find out करना है. That you can do by yourself. Just write this down and then we'll proceed to the next one. So what's the in the final? In the final step. That's T upon T divided by K. K is, okay. That's K, right? Okay. नोट कर लिया? ये निहार फटक से स्क्रीनशॉट लेके एंड देन बैठ जाते हैं. बाद में लिख लूंगा, अभी नोट्स भी सबमिट करवाऊंगा मैं. अरे इफ यू आर राइटिंग इट्स गुड. Note submit मतलब Means the notes that you are making na, so just take a photo, convert it into PDF and upload it on the Google Drive. yeah. ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि बोल रहा कि बहुत अच्छा हैंड राइटिंग होना चाहिए एंड ऑल दैट. बस मुझे श्योर होना चाहिए कि हाँ यू आर राइटिंग समथिंग.
समथिंग में इसकी जो क्लास में पढ़ाया गया, समथिंग में ये नहीं कि फिलोसफी लिख रहे हैं उसमें। ओके ओके, प्रोसीडिंग फर्दर। सी अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा रखा कि एरिया सेम हो, सो विल कंसीडर इट अ सीरीज इक्विवेलेंट। Series equivalent. There is another possibility that dielectric medium is placed like this. And सब कुछ सही है, बट यहाँ पे मैंने स्मॉल रीजन में so half area, let us say half area, और let us say total area A1 था, and out of total area A था, out of that A1 area is covered by the dielectric medium of dielectric constant K, and gap between the plates is D. ठीक है, कैन यू इमेजिन दिस डायग्राम? दो कैपेसिटर प्लेट्स है एंड इधर वाला अभी भी खाली है, इधर वाला फिल्ड है। ओके, और लेट अस से इसको पूरा ही फिल कर देते हैं दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। इधर वाला K1 से फिल्ड है और इधर वाला K2 से फिल्ड है। कैन यू विजुअलाइज दिस? हाफ some area covered by A1, some area covered, rest of the area is covered by, let us say A2 area is filled by dielectric medium of dielectric constant K2. सर पहले तो एकदम प्लेन था ना, मतलब प्लेन शीट जैसा था, ये कैपेसिटर है ना? हाँ, तो पहले भी कैपेसिटर ऐसा ही था, वो तो मैं 2 डायमेंशनल शो कर रहा था। Okay, that's why I'm writing area A, asking the serious questions. Okay, so let us say total area is A, that is A1 plus A2. And if we divide this capacitor into 2, so I will split it like this. So it will be like two plates in two capacitors in parallel. So I'll be splitting the plates. So when I'm splitting the plates, I'll be splitting the area of the plates. So I'll be getting two capacitors like this, and we have a blue dielectric medium, and second I have a green dielectric medium, dielectric constant K1, K2. So here I can calculate individual capacitance. So individual capacitance for this will be A1. Instead of epsilon naught, you'll write K1 epsilon naught. So A epsilon naught by T hota hai. So A1 K1 epsilon naught by, the gap remains T. The gap remains T. And for this capacitor, capacitance is A2, then K2 epsilon naught by D. Okay. So equivalent capacitance, if you write, so we can write we can write it like this: 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2. No? Okay. So it is C equivalent is C1 plus C2. So C equivalent is C1 plus C2, डायरेक्टली ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सीरीज में है, सॉरी दोनों पैरेलल में है। ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट सेम पोटेंशियल पे है, और ये वाला प्लेट सेम पोटेंशियल पे है। कोई अच्छा बच्चा ड्रॉ करेगा तो उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो दोनों they both are in parallel because these two plates are connected now, so they have the same potential. Same potential means we can split it like this. Okay, if this is point P, this is point Q, I can write this is point P, point Q, point P, point Q. So both are in parallel.
If both are in parallel, we can just add the capacitance. It will be add this K1A1 epsilon naught by D plus K2A2 epsilon naught by D. I can take epsilon naught by D common. This will be K1A1 plus K2A2. क्लियर है? इसे फॉर्मूला याद नहीं रखना, ट्रिक याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में वैल्यूज दिए होंगे. So using the formula will not be that helpful. Just remember the tricks. If area is divided, then it will be splitting into parallel capacitors. If distance is divided, then it will be splitting into capacitors in series. You have to visualize how these capacitors is split. Okay, note this down. Sir, could you repeat? If area is divided, then capacitor is splitting into parallel capacitor. And if Yes. distance is splitting, then capacitor is dividing into series capacitors in series. Okay, note this down. Yes. Okay, see, sometimes questions like this are asked. There was a parallel plate capacitor, everything was going well, and then something happened like this. Well, so what they did was they added another plate of same area, another conducting plate of the same area. Okay, conductor, or you can say area, another conducting plate. So conducting plate अगर put कर रहे हैं कहीं भी, so we know अगर initially there was a plus Q charge distributed over here and minus Q charge distributed here over here, then ये plate add करने से कोई ज़्यादा difference नहीं आएगा, because there is electric field in this region. So what will happen? It will induce charge like this, कि इस वाले surface में minus Q charge induce हो जाएगा and इस वाले surface पे plus Q charge induce हो जाएगा. Okay, because what is happening, conductor में in the conductor the electric field should terminate. So electric field should start from here and terminate here. Should terminate here. The electric field will start from the positive charge and terminate here. Terminate here. All right. So this was a conducting plate of very small thickness. So let us see if it affects the equivalent capacitance. Originally the area was A. And the gap between the plates was D. And let us say the plate was put at T1 distance from the first plate. So if I calculate the new capacitance, so again they both are in series. They both are in series. So I can write 1 by C equivalent. I will call this capacitance of this region as C1, this region as C2. And if I write the original capacitance, that will be just A epsilon naught by D. If I write C1, C1 will be A epsilon naught divided by T. Divided by T. This is the first capacitor. This region is the first capacitor. And C2 will be A epsilon naught. This gap between these two will be D minus T. Is this clear? Okay. So 1 by C equivalent, that will be 1 by C1 plus 1 by C2. So T by A epsilon naught plus D minus T by A epsilon naught. So from here, if you add this, you'll get D by A epsilon naught.
So C equivalent is equal to A epsilon naught by D. That is equal to original capacitance C naught, you can say. So adding another conducting plate, it does not change the capacitance. The capacitance remains the same. Capacitance remains the same. Any questions? Okay. Note this down. We can also do this by electric field method. Electric field will stay the same because charge and area is the same. So capacitance will remain the same. Note this down quickly. अब पूरा दोनों हाथ से लिखना है, बहुत जल्दी लिख पाएंगे फिर. Apurav, noted? Okay. Now see, in the next case, what we have is we have added a thick conductor block here of thickness T. So original capacitance, if you write, it was A epsilon naught by D. But now, once you have added a thick conductor block, plus Q will induce a charge of minus Q on this side. And this minus Q will induce a charge of plus Q on this side. There will be electric field from positive to negative. Positive to negative. But there is no electric field in this region. In the conductor, inside the conductor, electric field remains 0. Okay, so let us do this by electric field method. If we write the electric field in the first region, in the second region, and in the third region. So electric field in the first region will be Q by A epsilon naught. In the second region, electric field is 0. And in the third region, electric field is Q by A epsilon naught. Okay. Okay. Let me call this distance of this two as T1, this distance as T1, and this distance as T2. So I can write T1 plus T2 is equal to total gap minus T. T1 plus T2 plus T is D. So T1 plus T2 is D minus T. So if I write the potential drop V is equal to potential drop at V1 plus potential drop at V2 plus potential drop at V3. V1 will be equal to E1 into T1. V2 will be equal to E2 into T2, and V3 will be equal to E3 into T3. So here I can put the value of E1, that will be Q by A epsilon naught into T1. E2 is 0. E3 is Q by A epsilon naught into T3. Right here T2. So this will sum up as Q by A epsilon naught T1 plus T2. T1 plus T2 is D minus T from here. That is Q by A epsilon naught to D minus T. So potential is Q by C. So I can write this as A epsilon naught by D minus T will be equal to Q by V. C equivalent is equal to Q by V. So I can write equivalent capacitance is equal to A epsilon naught by D minus T. So what it did basically was nullify the space of T. Because due to this conducting block of thickness T, it looks like the thickness T tha, that is not available to the capacitor for capacitance. So could you repeat that, please? D becomes D minus T. Originally it was D. Now it is D minus T. T was the thickness of the block. That means Yes. this amount of thickness is not available to the capacitor.
if you compare it with the previous formula, for this case, here there was a dielectric medium and the formula K came out to be D minus T plus T by K. If you put K is equal to infinity, we'll get the same formula. यहाँ पे भी T thickness का dielectric medium use किया था. Here, if you put K is equal to infinity, then you'll get the same formula, A epsilon naught by D minus T. That means conductors have a dielectric constant of value infinity. Conductors, the value of dielectric constant for conductors is infinity. And write this as note. Any questions? Okay, note this down. अब पूरा फटाफट लिखना है दोनों हाथों से. Then can move to the next subtopic. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं है. अगर बेसिक समझ में आए तो बेसिक्स रूल्स फॉलो किए तो कैन सॉल्व दी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो. कैपेसिटर तो और भी इजी है. हाँ, इजी तभी होगा जब पढ़ाई करेंगे. मींस पढ़ाई नहीं की, जस्ट लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे. ऐसा 10th में चलता था. 10th में चलता था. हाँ, अभी नहीं चलेगा. The syllabus is around, you can say, for you it is 30-40 times more than the syllabus that was in 10th. मैं और फटाफट लिख लेता है. हैंड राइटिंग बड़ी खराब रहती है. तो अच्छी हैंड राइटिंग में नोट्स भेजना है, मतलब मुझे समझ में आना चाहिए क्या लिखा हो. Yes. Done? Apurav? Okay. हो गया. Okay. Okay. Now we are going to learn how dielectric works. मतलब dielectric में क्या ऐसा सिस्टम है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है. And for that, we're going to study first what is a dipole and how dielectric medium is composed of very tiny dipoles. So take a molecule, for example, take a molecule of HCl. So you know that this molecule, chlorine is electronegative. If chlorine is electronegative, here it is a small positive charge. Here there is a small negative charge. So it works like a dipole, a tiny dipole. Tiny dipole. Same goes for water. So water can be considered a tiny dipole, delta positive, delta negative, like this. So most of the molecules that are there, they act like tiny dipole. And even if not, even if there is a neutral hydrogen atom. So even in neutral hydrogen atom, you know that all the charges uniformly distributed. Okay. But in a normal substance, all these dipoles, Niha, you don't have to write it right now. First, pay attention on what I'm explaining.
So in a normal substance, means what happens? The dipoles, the tiny dipoles, they are arranged randomly. They're arranged randomly. Positive, negative, किधर भी direction में जाए, they don't. So they are arranged randomly. But when this non-conductor or dielectric is placed in electric field. So in electric field, you see the effect of the electric field will cause them to align in certain ways. Earlier, it was randomly organized. So there was no net electric field of it. The resultant electric field was 0. But if you keep this SCl molecule in electric field, it will align itself like this. SCl molecule will align itself like this. The positive there will be force on the positive towards this. So positive charge से force होगा along the electric field and negative charge से force होगा away from the electric field. Right. So if there is a dipole, then you know that there is a torque force like this. So all the dipoles, they will try to align themselves according to the electric field such that the dipoles are aligned like this. Of course, not all of them will be aligned in perfect manner because there is a heat inside matter. So some of them will be vibrating. Some of them will be aligned at an angle, and all the molecules cannot move in solid. And in liquids, the motion is very random. So we are assuming that many molecules are aligned together to give resultant electric field like this. Even if you keep hydrogen in external electric field, what will happen? This will get distorted such that there will be some positive charge here and some negative charge here. So normally एक neutral atom है जो dipole नहीं बना रहा, इसका dipole moment 0 है. So then it will not form a dipole. But as soon as you apply the electric field, external electric field, there will be induced charge over it. And that is why all of the non-conductors, they act as dielectric because they tend to align due to the external electric field. They tend to align due to the external electric field. Align due to external electric field. And this process is called polarization. Polarization means you are influencing them such that they are getting changed due to in certain way. So they are getting polarized due to external electric fields. The tiny dipoles are polarized due to external electric field. Tiny dipoles polarized due to external electric field. So what happens inside dielectric is that the tiny dipoles, they are aligning themselves. When they have aligned themselves, they will start giving an electric field of their own from positive to negative, positive to negative. So they give their own electric field in the opposite direction. Here, there was electric field, but electric field was random in the random direction. And that is why the net electric field was 0.
all the individual electric dipoles were resulting in zero electric field, zero net electric field. But here they will result in some resultant electric field in the opposite direction. Any questions up to here? No, sir. Okay. So now suppose what happens when you keep keep a block of dielectric medium in a uniform electric field. So dielectric block in uniform electric field. अच्छा ये block 2-dimensional नहीं है, 3-dimensional है. I'm not drawing the third dimension as it will have some thickness. It will have some area. So there is an external electric field like this. And we'll call this electric field to be uniform, because that makes our study easier. So external uniform electric field E. External uniform electric field E, or call this E naught. So electric field outside is E naught. Now, as I said, due to this external electric field, there will be induced internal electric field. Induced internal electric field in the opposite direction. This is induced internal electric field. Call it E inside or E induced. Here, due to these all electric field, they are added together and they gave result in an induced electric field. So E inside is induced electric field or induced electric field due to polarization. Due to polarization effect. Now, the sum of these two will be net electric field. The sum of these two will be net electric field. So net electric field, we can write the net electric field will be E naught minus E inside. External electric field minus the internal electric field. कंडक्टर के केस में इंटरनल वाला एक्सटर्नल के इक्वल हो जाता है. कंडक्टर के केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज व्हाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0. बट हियर वी हैव लर्न कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट बिकम्स E naught by K or epsilon R times, where epsilon R is dielectric constant or relative permittivity. So from here I can calculate the induced electric field. I can also write this as K. Some people like to write this as K. So this will be E naught by K. So I can calculate the induced electric field. That will be E naught minus E naught by K. So induced electric field will be E naught into 1 minus 1 by K. So this is the mechanism that because of the external electric field, there are induced, the dipoles are polarized. They are aligned in a certain direction that is causing a net internal electric field, and
this internal electric field, it opposes the external electric field. And that is why the net electric field is lesser than E naught. The net electric field is lesser than E naught. And we have calculated the electric field inside due to the polarization effect is this much, E naught into 1 minus 1 by K. So E net will always be in the direction of E naught, right? E net will always be in direction of E naught. You can Okay. add them like vectors. Okay, note this down. Sir, will dielectric block not move because E net is in direction? Yes, it will start moving. But for the most of the cases, the net force becomes zero. We'll calculate that. There is force on it, but in uniform electric field, it becomes zero. Okay, note this down. ऊपर वाला note कर लिया? We'll be noting it. Okay, noted. Sir, you are on mute. Note कर लिया? Sir. Okay. So dielectric medium filters out the electric field and reduces its effect. So अगर किसी dielectric medium को हम plates के बीच रखते हैं, capacitor के plates के बीच रखते हैं, so same thing will happen. Plates generate a uniform electric field, and let us say charge on the plates is Q and the plate area is A. Charge plus Q will be uniformly distributed over here. And minus Q will be uniformly distributed over here. And if we put a dielectric slab here, so here let us say electric field is E naught. So in this region, electric field is, let us say, E dash. So E dash, as I said, E dash is equal to, we have calculated, net electric field is E naught 1 minus 1 by K. So this will be E naught 1 minus 1 by K. Because dielectric constant is K. What happens inside that we already discussed. But there is internal electric field. That internal electric field, that is E inside, is there. That means there will be charges on the surface. There will be charges on the surface. And let us say charge on the surface is Q dash. So here it will be the positive charges, some positive charges, and here will be some negative charges. But this positive charges and negative charge will not be equal. So electric field lines आएंगे ढेर सारे. Some of them will pass through. Some of them will pass through. And some of them, they will stay like that. They will just terminate here. And that is why it is filtering out the electric field. So here there are more electric field lines. There are more electric field lines. So electric field is more here. So E dash is E naught 1 minus 1 by K. We can also write for this. E dash is Q dash by A epsilon naught. And E naught ke liye it is Q by A epsilon naught. So from here we can write the induced charge on the surface. That is Q dash is equal to Q into 1 minus 1 by K. This is the induced charge on the surface. And because of this charge, there will be force on this left direction and on this right direction. So charges equal hai, to force bhi equal ho jayenge opposite direction mein. And that is why net force in this case is 0. But agar uniform electric field nahi hota hai, then force will not be 0. But that case is not in your syllabus. Okay, note this down.
Then last Saturday there is a formula test remaining. So we'll start that in a minute. It is submitted by 5:40, 5:41, 8:41. Note this Sir, now. could you please, sir, could you please repeat the last line you said that it's not in syllabus? When non-uniform electric field the force and criteria is not in your syllabus. Only this much is in your syllabus. Okay. Note this. So you have to submit the worksheet 2 and 3 by tomorrow. And you have to also upload the notes of these 4 chapters. Now, first 3 chapters of electrostatics and this chapter of capacitor. Capacitor chapter is over. We'll be discussing a few questions in the next class. So by Sunday, you have to upload the notes, and by tomorrow, you have to upload the worksheets. There's a different folder for notes in the Google Drive. Any questions? Okay. Notes पूरा एक साथ ही submit कर सकते हैं चारों chapters. Just take a photo, convert it to PDF, and photo ulta नहीं होना चाहिए. You know the whole thing. So, and writing अच्छी होनी चाहिए and all that. And that's it. That's capacitor. We'll discuss a few questions and your doubts in the next class tomorrow. And then we'll start with the current electricity chapter. So make sure you go through the whole chapter. And if you have doubts, then we'll be discussing it tomorrow. If not, then we'll continue with electric current. That's it for today. The formula test is uploaded in the group. Check it. You have to finish it by 8:43.